Jai Hind. So today we'll continue with the same topic, classification. We left at the place Andrews classification given in 1961. According to Andrews, gymnosperm is given the rank of a group of plants and divided into mainly 5 divisions. And the 6th division also included for those plants or those gymnosperms which are having uncertain position. The first division treated as pteridospermophyta. ये फर्स्ट डिवीजन है जिसमें ऑर्डर टेरिडोस्पर्मेल्स रखा गया. टेरिडोस्पर्मेल्स means the link between the pteridophytes and gymnosperm. These plants were kept under this division. Second division was Psychedophyta, under which 2 orders have been placed, Psychedales and Benititales. The third division treated as Gingophyta, है ना, जो गिंगोइल्स ऑर्डर था जिसको कि हम लोग साइकेडेल साइकेडोफाइटा के साथ पढ़ते थे, उसको सेपरेट डिवीजन का रैंक दे दिया गया है यहाँ पर गिंगोफाइटा एंड द ऑर्डर गिंगोइल्स. देन फोर्थ डिवीजन एज कॉनिफेरोफाइटा, under which 2 orders have been placed, coniferales and corditales. Corditales is fossil. Here in Psychedophyta, Benititales is fossil group. Then the 5th division treated as Neotophyta, under which order Netales have been placed. लेकिन इस Netales order में सारे वो plants जो कि developed plants थे, developed gymnosperms थे, वो रखे गए, जैसे Netum, एफेट्रा, वेल्वेशिया. एक अलग से डिवीजन बना दिया गया, अनसर्टेन पोजीशन डिवीजन, जिसमें पेंटोजाइली और वोजनोस्किएल्स रखा गया, जो कि बाद में चेंज करके इनको सेम क्लास में ट्रीट किया गया. लेकिन ये बहुत पॉपुलर नहीं हुआ एंड्रयूज का. कुछ बुक्स में अभी भी एंड्रयूज का क्लासिफिकेशन प्लेस्ड है, बट इट इज क्वाइट ओल्ड. Now coming to another classification which became very popular at that time और अभी भी बुक्स में है. स्पॉनी की अपनी बुक भी है जिम्नोस्पर्म की, और स्मिथ की बुक में भी स्पॉनीज क्लासिफिकेशन हैव बीन प्लेस्ड, और इंडियन राइटर्स भी इसको प्लेस करते हैं, और ये बहुत पॉपुलर क्लासिफिकेशन रहा स्पॉनी का. given in 1965, gymnosperms treated as the rank of division and divided into 3 classes: Psychedopsida, Coniferopsida, and Netopsida. Now the ending has been given the same place or opsida suffix. Now Psychedopsida class is divided into 4 orders: Pteridospermales, fossil group; Benititales, fossil group; Pentoxylales, fossil group, जिसको uncertain position दी गई थी Pentoxyli के फॉर्म में, that has been placed with Psychedopsida. And the 4th order, Psychedales, which is a living gymnosperm order. So these 4 orders have been placed in the class Psychedopsida. Second class, Coniferopsida, again divided into 4 orders. These 4 orders, first is Corditales, fossil group or fossil gymnosperms kept under this. Then second is Coniferales. This is the biggest order of this class, Coniferopsida, living genus. Then Taxales, Taxus, in which we study plant, Taxus, and Gingoids. Gingoids is living fossil. So this is only the fossil group. Rest are present today. Then the third class is Netopsida, under which order Netales have been placed. Later on, these orders have been separated for different genus as Netales, Velviciales, and Ephemerales under the class Netopsida. So this is about Spawny's classification, which became popular, and still in some books we are using this Spawny's classification. Then in 1971, Bayrhorst given slightly modified classification of Spawny. He also treated
Gymnosperm as the rank of division. Divided into 3 classes again, similarly, Cycadopsida, Coniferopsida and Netopsida. यही तीनों classes include की गई. Then Cycadopsida is, instead of 4, divided into 6 classes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. See, what are same classes? First class is Pteridospermales, again the fossil group. Second class, Chaetoniales, this has been added as a new order. Then third is Cycadiodales. This is also the new order. Then Cycadales, Pentoxylales, and Glossopteridales. This has been also included in the class Cycadopsida. So some names have been changed and these orders are 6 orders, out of which Cycadales is the living order. Rest are fossils. Right? Out of 6, only this is the living genus and rest are fossil genera. Then Coniferopsida, it is divided into 5 classes now. First is Corditales, fossil genus group. Then Protopteales, a new order has been added. Ginkgoales, living fossil. Coniferae, living genus, and Taxus. These are similar ones. So what is added here? Protopteales. Now coming to Netopsida. Netopsida is, as told you earlier, divided into 3 orders according to the genus. Ephedrales. These all are living. The full class is the living genus of the Gymnosperm. Ephedrales include genus Ephedra. Then Netales include genus Netum, and Welwitschales include genus Welwitschia. So how Bayer has given this classification? This has also been very popular, and if it comes that which classification do you follow, तो हम लोग यही classification को generally follow करते हैं Bayer-Horst. इसके बाद भी modifications आए classification में, तो जहाँ modifications आए वो मैं आपको ऐसे शो करती हूँ, क्योंकि अब आप ऑनलाइन जाके सर्व करिए तो आप जब भी डालते हैं तो पिनोफाइटा आ जाता है ना, मतलब एज द डिवीजन ऑफ रैंक. पिनोफाइटा क्या है ना, जो हम लोग कॉनिफेरॉप्सिडा एज ए क्लास पढ़ते हैं उसको पिनोफाइटा कह दिया. पिनोफाइटा यानी अब कॉनिफेरॉप्सिडा को, क्योंकि इसमें पाइनेल्स पाइनस आता है और स्मॉल लीव्स के प्लांट्स होते हैं, तो इनको थोड़ा सा रैंक बढ़ा दिया गया, तो इसको डिवीजन पाइनोफाइटा कर दिया. लेकिन पाइनोफाइटा में जो क्लासेस इंक्लूड की उनमें से एक क्लास साइकोडॉप्सिडा भी है. तो इसमें 3 क्लासेस को ट्रीट करते हैं. जो जनरल माइंड का क्लासिफिकेशन ऑनलाइन आप लोग जब ढूंढते हैं गूगल पे तो यही मिलता है हमको, या विकिपीडिया पे भी दिया हुआ है. इसमें क्लास गिंगोप्सिडा कर दिया, क्लास साइकोडॉप्सिडा कर दिया, क्लास पिनोप्सिडा कर दिया. लेकिन ये हम लोग अभी अपनी बुक्स में फॉलो नहीं करते, ये थोड़ा स्लाइट मॉडिफिकेशन एज डिवीजन पाइनोफाइटा किया. इसलिए भी क्या कि कोन्स आर प्रेजेंट, मेल और फीमेल कोन्स आर प्रेजेंट. तो जनरली सभी जिम्नोस्पर्म में कोन लाइक स्ट्रक्चर्स फॉर्म होते हैं, एक्सेप्ट द एडवांस जीनस लाइक द क्लास नीटोप्सिडा. तो गिंगोप्सिडा को सेपरेटली एज ए क्लास ट्रीट किया गया और उसमें ये फिर ऑर्डर्स इंक्लूड किए गए, जिसमें कैलोमोपेटियल्स है, कैलिस्टोपेटियल्स है, अकॉर्डिंग टू डिफरेंट करेक्टर्स. पेल्टास्पर्मेल्स है, गिंगोइल्स है, लेप्टोस्ट्रोबल्स है, केटोनियल्स है, आर्बोरियल्स है, पेंटोजाइलस और एफेड्रल्स, इनको एक ही उसमें कर दिया गया. यहाँ एफेड्रल्स जो कि एडवांस जीनस था वो गिंगोप्सिडा के साथ रखा गया, लेकिन ये अलग करेक्टर्स शो करता है क्योंकि इसमें फ्लावर लाइक स्ट्रक्चर्स आर फॉर्म्ड. Then Cycadopsida included the genus order Leginostomales, then Trigonocarpales, Cycadales, Benititales, Netales, Welwitschales. अब देखिए यहाँ गिंगोप्सिडा में एफेड्रल्स और साइकेडॉप्सिडा में नीटेल्स और वेल्विशियल्स को डाल दिया, जबकि इनमें तीनों में करेक्टर्स काफी सिमिलर होते हैं. देन क्लास पिनोप्सिडा, इसमें ऑर्डर कॉर्डेंथिल्स एंड देन पाइनेल्स. पाइनेल्स इज द पाइन ग्रुप ऑफ plants. तो ये थोड़ा क्लासिफिकेशन, बट वी आर नॉट स्टिल फॉलोइंग इट, लेकिन ये मॉडिफिकेशन आया. देन इन 1989 गिफोर्ड एंड फॉस्टर considered the general tendency in recent years to establish several major texts of extinct and living gymnosperm have raised the important groups to the rank of division. अब इन्होंने जो living और fossil gymnosperms थे उनको यहाँ extinct groups से
उनको रैंक ऑफ डिवीजन तक ले गए, यानी जैसे हम लोग डिवीजन अभी हमने पढ़ा पिनोफाइटा कर दिया, तो वो रैंक ऑफ डिवीजन ये भी कंसिडर करते हैं कि इनको किया जाना चाहिए. Their classification of gymnosperm lists only the major divisions and selected orders. उन्होंने सारा इंक्लूड नहीं किया उसको, उन्होंने कहा कि नहीं इतना बड़ा देने की जरूरत नहीं है, इसको कंसाइज करके शॉर्ट में कर दिया जाए. तो जो इनके क्लासिफिकेशन में आता है वो कुछ ही डिविजन्स को लेकर के कुछ ऑर्डर्स के सिलेक्टेड ऑर्डर्स के साथ दिया गया क्लास. सो दिस मे बी कॉल्ड एज द मॉडिफाइड क्लासिफिकेशन. देन इन 1990 क्रैमर एंड ग्रीन, इनका भी केवल मॉडिफिकेशन मैंने यहाँ शो किया है. दे क्लासिफाइड जिम्नोस्पर्म व्हिच इज ट्रीटेड एज रैंक ऑफ डिवीजन इनटू 2 सब डिविजन्स. अब डायरेक्ट क्लासेस में डिवाइड करने की जगह जैसे 3 क्लासेस में डिवाइड किया था हम लोगों ने, साइकेडोप्सिडा, कॉनिफेरॉप्सिडा, नीटोप्सिडा, अब इसको 2 सब डिविजन्स में डिवाइड कर दिया जिम्नोस्पर्म को, और उनको रैंक थोड़ा सा बढ़ गया, यानी अब क्लास की जगह वो सब डिविजन में ट्रीट किए गए. और सब डिविजन को जो एंडिंग दी गई वो दी गई फाइटिना, है ना. यू कैन सी हियर एंडिंग फॉर सब डिविजन इज फाइटिना, साइकेडोफाइटिना एंड कॉनिफेरोफाइटिना. ये 2 ही डिवीजन ट्रीट किए जाए. वी शुड नॉट गिव द वास्ट क्लासिफिकेशन. तो क्रैमर और ग्रीन ने उसको कॉन्साइज करके शॉर्ट कर दिया. अब इनमें क्लासेस बनाई गई, लेकिन क्लासेस में फिर ऑप्सिडा एंडिंग नहीं दी गई. तो अभी भी हम लोग इसको अभी बुक्स में कहीं आया नहीं है, बट ऑनलाइन इट इज अवेलेबल. सो you can go through the Kramer and Green's classification for gymnosperm. These classes were Sagittae, so ending were treated as TAE here. Then Nitati and Coniferophytina included the classes as Gingoati and Pineati. तो इसमें ये तो वही सब नहीं है. साइकेडेटी में सारे फॉसिल एंड लिविंग जीनस और साइकेडोप्सिडा जो हम लोगों ने क्लास ट्रीट किया था वो आ जाएंगे. नीटोप्सिडा नीटेटी ट्रीट किया गया, और गिंगोएटी गिंगोप्सिडा जो बाद में दिया गया क्लास के रैंक तक, लेकिन इसको हम लोगों ने ऑर्डर में पढ़ा था गिंगोएल्स में. तो प्लेस वही है, लेकिन इनमें मॉडिफिकेशन ऑफ नेम्स एंड दे ट्रीटेड द क्लास and raised the class as the subdivision. And Pineati is the pineals order, or Pinopsida, or you can say Coniferopsida. So this is about the classification. So I've taken many classification from different books and some online. So this is the chapter of classification has been finished over here. So I will start with another topic, that is distribution of gymnosperm. And in your course that is with special reference to India. तो हम लोग जो भी जिम्नोस्पर्म का डिस्ट्रीब्यूशन थोड़ा थोड़ा हम लोग लेते जाएंगे कि ये इसमें कौन कौन सी स्पीशीज है, कितनी स्पीशीज है, और इंडिया में कौन कौन सी फॉर्म है. तो हम लोग विद स्पेशल रेफरेंस टू इंडिया ही ट्रीट करेंगे यहाँ पे. ओके, हम लोगों ने अभी चूंकि क्लासिफिकेशन पढ़ा तो हमारे लिए बहुत फ्रेश है ये क्लासिफिकेशन. तो हम लोग अगर ऑर्डर्स के बेस पे करें, अगर हम लोग क्लासेस लेते हैं तो काफी वास्ट हो जाता है. तो उन क्लासेस में कौन कौन से ऑर्डर्स इंडिया में प्रेजेंट है, तो वी आर ट्रीटिंग दैट. तो दीज 3 ऑर्डर्स जनरली फाउंड इन इंडिया, साइकेडियंस, कॉनिफेरल्स एंड नीटेट्स. तो ये लिविंग है, हम लोग लिविंग जिम्नोस्पर्म का डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर रहे हैं. और फॉसिल जिम्नोस्पर्म्स हम लोग पहले बॉटनी के साथ पढ़ेंगे, यहाँ जो वो ऑर्डर्स ट्रीट करेंगे, जैसे हम लोग पेंटोजाइलेट्स पढ़ेंगे, तो दैट इज नॉट नाउ प्रेजेंट. तो हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन जो लिविंग जीनस है उनका स्टडी कर रहे हैं विद स्पेशल रेफरेंस टू दीज 3 ऑर्डर्स. दीज आर जनरली प्रेजेंट इन इंडिया, साइकेडियंस, कॉनिफेरल्स एंड नीटेट्स. So come to the first order, that is order Cycadales. Indian Cycadales are represented by 5 species of Cycas only and occur mainly in South India, है ना, जो generally present होती हैं naturally, or otherwise we cultivate them in our gardens. The first species is Cycas bedomii, present in or distributed in Madras and dry hills of Virchudappa in Andhra Pradesh. Second genus, Cycas cercinalis, distributed in Andaman and Nicobar Island and some dry deciduous forests of South India.
So generally they are distributed in South India. The third species is Cycas rumphii. It is distributed in Andaman and Nicobar Island. Similar species to rumphii is Cycas griffithii, present in Manipur and Naga Hills. Almost similar, but distribution is different. Then fourth species is Cycas pectinata. It is distributed in Assam, Bihar, Sikkim, and several parts of eastern India. And the next species is Cycas revoluta. It is a Japanese species. And it's not Indian species, but present in India. It is cultivated commonly in Indian gardens. तो कभी ये ट्रांसपोर्ट करके लाई गई यहाँ पर और अब ये यहाँ पर हमारी गार्डन्स में ग्रो करती है. नेचुरली वाइल्ड कंडीशन में ये नहीं प्रेजेंट होती है. इट इज नॉट प्रेजेंट इन वाइल्ड कंडीशन, बट वी ग्रो इन आवर गार्डन्स. वी कैन ग्रो इन आवर pots as well as on the soil, in the soil. तो इसका मतलब इसको हम लोग इजीली कल्टिवेट कर सकते हैं, बट जनरली इट इज नॉट कॉमनली वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड. सो दिस इज first order cycadales with the species Cycas, which is mainly present in India. Now coming to the second order, that is order Coniferales. Coniferales are the dominant forest makers of wood. ये पूरे संसार में सबसे ज्यादा, मैंने पहले ही आपको बताया, ये सबसे बड़ा ऑर्डर है और पूरे वर्ल्ड में इसकी जीनस डिस्ट्रीब्यूटेड है, वाइडली प्रेजेंट होती है ना, क्योंकि एवरग्रीन फॉरेस्ट का पार्ट बनाती हैं. आउट ऑफ 54 लिविंग जेनरा ऑफ कॉनिफरल्स इन द वर्ल्ड, है ना, देख रहे हैं आप, सबसे ज्यादा इनके जीनस हैं. 10 have been reported in India. इंडिया में केवल 10 ही रिपोर्टेड हैं from different parts of India. These are Abies, Cedrus, Cephalotaxus, Cupressus, Juniperus, Larix, Picea, Pinus, Podocarpus, and Siuga. इसमें T silent रहता है. So these genus are distributed in India. The distribution of majority of these members is restricted mainly in the Himalayas and governed chiefly by altitudes. क्योंकि ये हाइट्स पे पाए जाते हैं और हिमालयन रेंजेस सबसे बड़ी हमारी माउंटेन रेंजेस है इंडिया की, तो वहां पर ये मेनली डिस्ट्रीब्यूटेड है. एंड दे लव हाइट, क्योंकि गर्मी जहाँ जहाँ गर्मी शुरू हो जाती है या कोल्ड टेम्परेचर नहीं रहता, वहाँ ये ग्रो नहीं करते हैं. Brief description of their distribution is as the first species we treat it as Abies. लोग Abies लेके चलते हैं. It is represented in the country by only 4 species, out of which Abies dalvii and Abies densa grow in eastern Himalayas, whereas Abies pindro and Abies spectabilis are restricted to western Himalayas. तो ईस्टर्न और वेस्टर्न हिमालयाज में ये चारों स्पीशीज का डिस्ट्रीब्यूशन है. ईस्टर्न हिमालयाज में Abies dalvii एंड Abies densa, और वेस्टर्न हिमालयाज में Abies pindro एंड Abies spectabilis. अब ये नाम आपके लिए नए आ रहे हैं जिम्नोस्पर्म के, इनको याद रखेंगे क्योंकि इंडिया में ये 10 जीनस वाइडली रिपोर्टेड हैं. Now, Abies pindro grows luxuriantly, यानी बहुत अच्छी ग्रोथ होती है at about 2500 meters above sea level. इतनी हाइट पे ये ग्रो करता है. Luxuriantly means अच्छी तरह से और फ्लरिश करता है. Whereas Abies dalvii occurs commonly at an altitude above this, means 2500 meter से ज्यादा पे पाया जाता है हाइट पे. ये 2750 to 3350 मीटर्स की हाइट पे होता है, यानी 2750 to 3350 meters above sea level. Abies densa grows luxuriantly in Darjeeling and adjacent hills. Next, come to the second genus, that is Cedrus. In India, it is represented by only one species. एक ही स्पीशीज है इसकी, Cedrus deodara, जिसको हम लोग मूवीज में भी देखते हैं, कॉमनली देवदार कहते हैं.
फिल्म की शूटिंग अक्सर होती है यहाँ पर, है ना, देवदार के पेड़ों के बीच में। पुराने सॉन्ग्स तो बहुत इस पे किए गए हैं शूट। तो दिस ब्यूटीफुल ट्री इज फेमस फॉर इट्स वुड। देवदार की वुड बहुत लाइट, कॉम्पैक्ट और अच्छी होती है, जिससे कि हम लोग वुडन आइटम्स बहुत ज्यादा बनाते हैं। लाइट कलर की होती है एंड ग्रोज इन वेस्टर्न हिमालयस between 1200 to 3300 meters height or altitude. So this is very popular Indian tree, Indian gymnosperm. Second species Deodara ki. Now we come to the third genus, third genus, that is Cephalotaxus. After citrus, the third genus is Cephalotaxus. It grows in eastern Himalayas and represented by two species. First is Cephalotaxus griffithii and second is Cephalotaxus mannii. These two species are present in eastern Himalayas, or restricted to eastern Himalayas rather to say. The fourth genus is Cupressus. 3 species are reported from India. 3 species of Cupressus as Cupressus tortuosa. It grows throughout in the outer and middle ranges of Himalayas. कहाँ से कहाँ तक है? From Chamba Hills in Himachal Pradesh. है ना, specific है इसका distribution from Chamba Hills in Himachal Pradesh to Akka Hills in Assam. तो हिमाचल से आसाम तक इनका distribution है. At an altitude from 1800 to 2800 meters. देखिए ये जो हाइट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है इन जिम्नोस्पर्मिक प्लांट्स के लिए. ये प्लेन्स पे जनरली ग्रो नहीं करते. मान लीजिए अगर हम पाइनस को यहाँ लाके ग्रो करा दें तो वो बहुत अच्छा ग्रो नहीं करेगा. क्यों? क्योंकि इट नीड्स अ कूल टेम्परेचर थ्रू आउट द ईयर. नेक्स्ट स्पीशीज Cupressus funivarus and the third species Cupressus sempervirens are cultivated as ornamental plants in Indian gardens. They are not wildly present or in a wild condition. They are not distributed. So we cultivate them. But in the cool atmosphere again, है ना, hilly areas में जो gardens हैं वहाँ पर. तो generally इनका distribution क्यों natural नहीं हो पाता? क्योंकि because they cannot grow naturally or they cannot multiply or propagate naturally. तो इनको हमें grow कराना पड़ता है और cultivate करना पड़ता है इनकी संख्या को बढ़ाने के लिए. But tortuosa is present in natural condition and grow naturally. Next genus is Juniperus. 6 species of Juniperus have been reported from higher altitudes of eastern as well as western Himalayas, especially in India as well as in Bhutan because it's a neighboring country to us. These species are, first is Juniperus communis, occurs at high altitude 2900 to 4250 meters in Garhwal. Second species is Juniperus coxi. It grows both in eastern as well as western Himalayas, approximately similar height as that of communis. Third species is Juniperus macropoda. It grows between 2500 to 4300 meters in Ladakh, Kanavar, and Alaknanda Valley. Fourth species is Juniperus recurva, and fifth is Juniperus squamata. It grows slightly more altitude, 3000 to 5000 meters in eastern Himalayas. And the sixth species is Juniperus wallichiana. Grows at an altitude between 3000 to 4200 meters in the Himalayan ranges. So these are 6 species of Juniperus. Next is Larix. Only one species is present, that is Larix griffithiana.
Occurs generally mixed with Abies, Pinus, and Tsuga in Sikkim, Chumbi Valley of Tibet, Bhutan, and Mishmi Hills in Assam. Next genus is Picea. Only one species is present in India, that is Picea smithiana. Sometimes it is pronounced as Picea. Grows in Western Himalayas and attains a height of about 60 meters, very tall gymnosperm. It grows from Afghanistan to Kumaon Hills. So India comes over here, means Kumaon में ज़्यादा ये पाया जाता है. Next is Pinus. थोड़ा सा ये मैं इसको बड़ा नहीं कर पाई थी, मैंने कॉपी पेस्ट किया था. It is represented by 6 species in India. These are Pinus roxburghi, Pinus wallichiana, Pinus insularis, Pinus gerardiana, Pinus armandi, and Pinus marcusii. So these 6 species are present in India. They are distributed throughout in Himalayan ranges. Pinus roxburghi grows at lower altitude between 2,000 to 5,000 feet. Very well distributed in Kumaon Hills. Then Pinus wallichiana grows in northwest Himalayas, ranging at an elevation above 5,000 to 12,000 feet. They need very cool or cold atmosphere. Then Pinus gerardiana, which is commonly known as chilgoza, used as a dry fruit, occurs on the Himalayan flanks extending from Punjab to Afghanistan. And Balochistan. So these are not, these are neighboring parts of India. Ranging within 5,000 to 12,000 feet. Again, they love cold throughout the year. Then Pinus insularis grows in Khassia and Chittagong Hills, that is in Assam. Next is Podocarpus. 2 species of Podocarpus, that is Podocarpus nerifolia and Podocarpus volchianus, present in India. The species nerifolia grows in the Andaman Islands and Eastern Himalayas, while volchianus in Nilgiri Hills and Assam. Next genus is Tsuga. Tsuga demosa, the only genus luxuriantly grows in Darjeeling and adjacent regions. Along with Abies, जो हम already पढ़ चुकी हैं, above the height of 2,700 meters. इनके अलावा कुछ जीनस और हैं जिनको कि हम लोग कल्टीवेट करते हैं, वो मैं आपको नाम बता रही हूँ. दे आर नॉट नेचुरली प्रेजेंट, दे ग्रो somewhere in natural conditions or cultivated in our Indian gardens. These include Orocaria, that is in your course. Orocaria की 2 species हैं, Orocaria cooki and Cunninghami. Second is Thuja, Thuja जिसको आप मोरपंखी कहते हैं. Thuja occidentalis, ये family Cupressaceae का member है. Then Cupressus cashmeriana, again Cupressus member. We cultivate both Thuja and Cupressus. Then Calitris cupressae, again from Cupressaceae. इसको हम लोग हेज की तरह से लगाते हैं, तो नीलगिरी हिल्स में फुल एटमॉस्फेयर में ग्रो करता है. इसको हम लोग हेज प्लांट की तरह यूज करते हैं. देन क्रिप्टोमेरिया जापानिका टैक्सोडिएसी का मेंबर है. ये दार्जिलिंग और अदर एरियाज में ऑर्नामेंटल ट्री की फॉर्म में इसको यूज किया जाता है. वेरी ब्यूटीफुल कोनिकल शेप इट गिव्स. So this is about distribution of gymnosperm with a special reference to India.
it may comes as a long answer question. Otherwise, till date, it is as short answer question in your papers. So I think not difficult. You can make notes for distribution of gymnosperms with a special reference to India. If you have any query, I have 6 minutes left. You may ask. Yesterday, it was quite busy schedule in the college. You may raise your hand or you may write in the chat box. अभी तक आप लोगों ने अपने सेमिनार के टॉपिक्स नहीं भेजे हैं. अभी केवल एक टॉपिक, 2 टॉपिक आए हैं मेरे पास, लेकिन एक टॉपिक कंफर्म है, दूसरे में कुछ डिस्टर्बेंस हो गया है मोबाइल का. सो शी विल सेंड मी अगेन, प्रियंका आई थिंक सो. और बाकी लोग अपने टॉपिक्स को प्रिपेयर करके भेजें, ताकि हम लोग, अगर कॉलेज की यही कंडीशन है तो हम लोग ऑनलाइन उनको ऑर्गेनाइज करें, जैसे हम लोगों ने लास्ट सेमेस्टर में किया था. तो वो चैप्टर्स कंप्लीट करने और नोट्स बनाने बहुत ज़रूरी हैं आपके लिए. टाइम है अभी आपके पास. आपकी एग्जाम्स मोस्ट प्रोबेबली मई लास्ट में हैं, टेंटेटिव शेड्यूल. तो कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग स्टडी करिए, फुल्ली स्टडी करिए और नोट्स बनाते रहिए. अभी प्रैक्टिकल्स की कोई नई जानकारी होगी तो हम आपको ज़रूर शेयर करेंगे. इफ नो क्वेरी, सो आई मे एंड द क्लास. मेरी आवाज आप तक आ रही है क्लास के लिए? यस मुस्कान, you may unmute and can speak. Yes, ma'am. Okay, I think no query. Okay, Jai Hind to all. So see you in the next class.